So, good afternoon to everyone. Now, in the last lab session, we have seen about our class and object. Last, we have seen the class and object programming. And today, we will see the programming of the first, we will see the programming of the constructor, the programming of the default constructor, then parameterized constructor, and the third one will be the copy constructor. So one by one, I will show you the program of the constructor first. Then we will move to the inheritance program. So first, default constructor. Now everyone know that what is the default constructor? The default constructor is basically if there is no constructor available in the class. If there is no constructor didn't available in the class, in such cases, Java compiler provides the default constructor by default. So by default, it will be provide. Now we will see the program of the default constructor. And another thing is what? In this default constructor, the constructor has no argument. It is without the argument constructor. So the first program, we will see an example of an constructor program. So let's start the program of the constructor. Now this is an example program which we are doing. That this program is basically, you can name it as the Java program to create and call the default constructor. Okay. So let's say as an example, we are taking a class and that class name, let's say we are giving that class name as car. Like a class we are declaring. Then inside this class, now we want that there should be a default constructor, and this default constructor, some value should be given. We will bring that. So this is what we want. Now constructor is what? The name of the class and the constructor name will be same. So the constructor name will be same as the class. So we have used that card name as car. So the class constructor name will be also the same. So it is name is car given. Now inside of this constructor, let's say we are seeing that a statement should be printed. A statement should be printed. So we will write system dot out dot println. We are writing like that, println, and in this we are writing this is my car. Let's say a normal statement should be printed. This normal statement should be printed there. Now we will complete the default constructor used. So this is what, this is, we are a default constructor in this example. We as a user giving this, we as a user mentioning the default constructor in our program. That is why it is said that default constructor mentioned by the user, default constructor mentioned by the user. So this is what, this is the default constructor we have mentioned. Now after this, what we will do, we will write the main statement. So public static void main, and here we are writing so inside of it, what we will do, inside of this main,
we will call the class, means we will create the class object. So class object should be created first. So what is the class name? Card. And let's say we are giving the object name as C equal to new card. That is what the default constructor is, what we producing this default constructor. And in this default constructor, what happened in this default constructor, we are calling that constructor because when we are creating the object of the class, then the constructor will be automatically called. So we are also providing that constructor in our program. Okay, so in our program we have already specified that constructor. So now we will see. So first save this program. Let's say we are the name of the class and this will be same. So we are mentioning carry dot card. Card is what? Card is the name of this class. So we are using card.java. And let's say this we are using pressing in the desktop. Okay, so now we will compile our code first. So compile this code first. So we have save it in the desktop. So you enter with the cd command desktop change directory. So we have moved to the desktop. Now java c card dot java. Yes, okay, that means the bytecode is created. So let's check. Yes, the bytecode has been created, card.class. Okay, so there is no problem. Now java file name, that is what it is showing. This is my card. So that's how a default constructor, the default constructor, a simple example of a default constructor in which we have mentioned the default constructor in our program. The constructor is mentioned in our program. So it will be what? It will be invoked at the time of the object creation. So when the object will be created, in that time, the constructor will be invoked. So this is the example of a default constructor. Okay, clear? It is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is the example of a default constructor. Now we will see another example of the default constructor, that is default constructor displaying the default values. That means we will mention the data types. In a constructor, we will mention the data type and variables. And if we didn't use any values there, then what default value they will show, we will see that. We will see that in our program. Okay. So let's change this. Now in this, the default constructor will display the default values. Default values will be printed. So let's say we are taking class name as the student. We are taking that as the name student. And this student class, it has two variables.
one is int id, another is string name. So in this class student, we have two instance variable we are taking. One is id and another one is what? Another one is the name. So now we will using a method that is void display. This method will display the values, and inside of it we are mentioning the statement system.out.println. Okay, and it will print id and the name. Okay, so that means the default value, default id is what? Integer type. Now here we didn't mention anything, we didn't give some value for assign. So that means what will happen, the default value will be shown. And here also we didn't mention the default constructor in our program. That means this here no default constructor is mentioned by the user. So JVM will do what? It will automatically construct the, when it will compile the code, in that time it will automatically call the constructor. It will create the constructor in that time automatically, and no value is assigned. So that means in that case default value will be printed. Default value will be printed there. So now what we have to do, we have to write the main public static void main. String args. Now here we are creating, let's say two object, or let's say we are creating three object. So student, this is our class. So let's say the first object is s1. S1 equal to new student. This is what? This is the first object we have created. Same as that we can create, we already seen that we can create multiple object of a class. We can create multiple object of a class and can assign different values in them, and can assign different values in that. So let's say this is another object we have created, s2, and we're creating this another object s3. So same class, you see the same student class is present, and we are creating what? We are creating three object of that student class. And after that, through the first object we are calling the display method. Then through the second object we will call the display method. And with the third object we will call the display method.
Okay, so see what value there it will be shown. You see, it is showing 0 and null. It is string. Here the string is mentioned id. Id is integer type, but here there is nothing mentioned, so it is showing the default value. So it is integer, so that's why the value is shown as 0. And name is the string type. Name is the string type, so that's why the default value of the string is null. So that's why it is shown 0 and null here. Okay, this is what if it is not shown and there is a default value mentioned. Let's say if we change that, you see for float what value should be shown. Float, we are giving the name as the float. Let's say So semicolon. yes, I know that. You see, there is, in case of float it is not shown. So that is basically for our default values, the default values सर that is सैलरी used. को डिस्प्ले तो नहीं करा है? हाँ, सैलरी का जो है 1 minute. सर प्रिंट मेथड में कुछ करना हो गया ना, सैलरी लिखना पड़ेगा ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। यस सर। उसमें सैलरी, राइट हम इसका मेंशन नहीं किए, इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है। राइट, उसका मेंशन करना होगा। राइट,
जी होगा। That is सर वो basically zero. सर वहाँ स्पेस देने गैप देने के लिए स्पेस देने के बाद हाँ प्लस डालना बोलो। पड़ेगा सर। हाँ वो तुम्हारा /t/n ये सब यूज करके उसमें तुमको देना है जो स्पेस के लिए। स्पेस जो है जावा में हम लोग ऐसे तब उसमें प्रेस यूज करके हम लोग कर सकते हैं जावा का स्पेस। Okay, this is for if there is no default constructor is done. Okay, so default constructor default values, if it is taking the default values, that means the default for float it will show as the 0.0, for integer it is direct showing 0, and for string it is showing the our null value, that if anything is not mentioned, then what we will do, it will call the default value. This is the case of the default constructor. And the last default constructor, it is what it is showing the default constructor with displaying the default values. Okay, and then we will see the parameterized constructor example. Parameterized constructor. Now parameterized constructor means it is mentioned in parameter, that means which have the argument, which has the argument. So that is the parameterized constructor which taking parameter as an input, that parameter. In default constructor there is no parameter, but for the parameterized constructor there is parameter present. So we will see the program. If we convert this program into the parameterized constructor, so we will convert this program. The program will be the same. We will only do what we are converting this program into the parameterized constructor. So there will be constructor present. Now you see the name of the class and the constructor name is same. Okay, then here I have mentioned two variables, id and name. So here I am doing, let's say we are mentioning I and string n, because two values, one is integer, another one is string. So that is why we are taking these two parameters, integer and string, and we giving the value name as I, variable name as I and n. And inside of it, what we will do, id equal to I and name equal to n. Okay, after that we will write the statement void display system dot out print ln. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे उधर भी हम कर रहे थे id मेंशनिंग क्लास, हम क्या किए नेम,
तो आईडी और नेम को हम लोग प्रिंट करेंगे, राइट। आईडी और नेम को हम लोग क्या है, प्रिंट करेंगे। अब पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब मेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन के अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे वो कोड क्या होगा, एनीवन, वो कोड क्या होगा? क्लास नेम ऑब्जेक्ट, क्लास नेम ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दे नेम कोई भी। सकते हो, हम जो Yes, एक sir. नाम दे दिए न्यू, यही की। मगर देखो इधर हम क्या किए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किए। हम क्या किए थे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब ये तो मेरा ऐसे होना चाहिए। तो ब्रैकेट के तो अंदर वन मतलब मुझे और क्या करना नेम होगा, डाल, ब्रैकेट के अंदर आईडी हाँ, और नेम डालना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा वैल्यू डालना पड़ेगा। अब इंटीजर ले रहा है, एक पैरामीटर मेरा इंटीजर टाइप का है, एक पैरामीटर मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो मानो हम लेट से नाम दे दिए 1, उसका जो आईडी है लेट से हम उसका 1 दिए, और नेम में हम दिए मानो कि अजय, ठीक है, ये एक गया। अब तुम मल्टीपल, हम क्या बोले कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मोर देन वन ऑब्जेक्ट हम एक क्लास के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम जितना ऑब्जेक्ट बनाओ, जितना ऐसे करके, मानो हम और एक बनाए, ये और एक ऑब्जेक्ट नेम दिए, इसमें इसको हम क्या किया, आईडी को हम 2 कर दिए, और इसमें दे दिए हम नीरज, ठीक है, सेकेंड टाइप का। और एक मानो हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते, उसमें क्या किए, ये 3 कर दिए, इसमें नाम दिए आदित्य, ठीक है। तो ये 3 किए, तुम जितना उसको कर सकते हो, जितना तुम उसमें बना सकते हो ऑब्जेक्ट, हम 3 बनाए। अब हमको क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको ये मेथड को कॉल करना है। कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कर पाते हैं। तो मानो ये जो फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसके थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को कॉल किए। तो उसके थ्रू डिस्प्ले मेथड में कॉल अगर करेंगे तो क्या वैल्यू शो करेगा, मेरा यही वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, A1 ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट है, A1 ऑब्जेक्ट का है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये वैल्यू मेरा शो करेगा। अब अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू करें, A2 डॉट डिस्प्ले, तो मेरा ये 2 और नीरज ये शो करेगा, क्योंकि A2 ऑब्जेक्ट में क्या है, A2 ऑब्जेक्ट के पास अभी जो वैल्यू है, A2 ऑब्जेक्ट के पास ये वैल्यू है 2 और नीरज। तो ये क्या होगा, डिस्प्ले जब करेंगे तो इसमें 2 और नीरज ये शो करेगा। और मेरा जो और एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए, हाँ बोलो, उस ऑब्जेक्ट में क्या है, और एक जो ऑब्जेक्ट मेरा है उससे हम कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले मेथड को। तो उसको अगर हम लोग करें तो मेरा क्या वैल्यू शो करेगा, यही 3 और आदित्य ये शो करेगा। तो
ये क्या गया, ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये मेरा क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम लोग अगर कंपाइल करते हैं तो देखो हम देखो तीनों वैल्यू शो किया, 1 अजय, 2 नीरज, 3 आदित्य। तो उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल किए, और डिस्प्ले मेथड में क्या है, डिस्प्ले मेथड में मेरा स्टेटमेंट जो है प्रिंट करना, मेरा डिस्प्ले मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट है प्रिंट करना, ये सब जो वैल्यूज हम दिए उसको प्रिंट करना है। तो देखो एट ए टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एट ए टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन we are sending the value, we are sending the value, and through this we are displaying that. So this is our parameterized constructor concept. Okay, तो ये हम मेरा ऐसे हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। देखो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। अब जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट और इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर देखो हम लोग क्या है, इनिशियलाइजेशन किए कि id इक्वल टू आई, नेम इक्वल टू n। देन हम लोग डिस्प्ले जो भी एक मेथड हम दिए, उस मेथड का काम क्या था, उस मेथड का काम क्या है कि मेरा जो वैल्यू होगा जो एट ए टाइम हम देंगे, एज ए टाइम जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एट ए टाइम जो वैल्यू हम देंगे उसको प्रिंट करना है। तो फिर उसके बाद हम मेन के अंदर क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और एज ए पैरामीटर देखो, एज ए पैरामीटर हम वो वैल्यू सेंड किए। फिर क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल किए। तो अब क्या होगा, ये जो वैल्यू ये A1 ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये A1 ऑब्जेक्ट के पास 1 एंड अजय, ये दो वैल्यू मेरा A1 ऑब्जेक्ट के पास है। तो अभी उसके थ्रू जब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो वही मेरा क्या होगा, डिस्प्ले होगा, वही मेरा कंसोल में प्रिंट होगा। तो वही देखो कंसोल में फर्स्ट प्रिंट हुआ। देन A2 से किए, A2 डॉट डिस्प्ले जब किए तो A2 के अंदर मेरा 2 और नीरज ये वैल्यू स्टोर था। तो जब उसको क्या है, उसको हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल किए तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो एग्जीक्यूट हुआ, और 2 और नीरज जो है वो प्रिंट हो गया। फिर A3 जो था, A3 के अंदर क्या है, A3 के अंदर 3 एंड आदित्य ये वैल्यू मेरा स्टोर हुआ था, क्योंकि एट ए टाइम हम क्या है उसको पैरामीटर सेंड किए थे। तो फिर जब उसको डिस्प्ले मेथड कॉल किए तो ये वैल्यू मेरा प्रिंट हो गया 3 और आदित्य। तो ये क्या है, ये हम लोगों का एज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम ऐसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर? प्रोग्राम में कहीं जाना में कोई प्रॉब्लम है? यस सर, नो सर। ठीक है, तो सर अगर ऐसे, हाँ बोलो हेलो बोलो। सर, अगर आईडी और नेम जो है, आईडी और जो स्ट्रिंग है वहां पर अगर हम वैल्यू डाल देंगे वहां पर ही सर, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ओ उसमें तुम वैल्यू अगर डालोगे तो मानो ये स्टेटमेंट को तुमको ऐसे यूज करने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे क्यों तब करोगे? तुम ये तो हम लोग जब करना चाह रहे हैं कि जब हमको ये आईडी और नेम का तो जो तुम वैल्यू डाल के तब तुम उसको क्या है कि यूजर के थ्रू जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करेंगे हम। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक मेंशन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर क्या है कि इंट आईडी इक्वल टू वैल्यू देंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ मेंशन करेंगे, वो तब हम करेंगे। ठीक है सर आपका आवाज बीच में रुक गया था, नहीं समझ आया सर। हाँ, इसका बोलना चाह रहा है कि मेरा जो है, मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये हम तब क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से नहीं करेंगे। यूजर डिफाइंड जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके पहले जो